हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। तो हम अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। लेट्स स्टार्ट विद स्टेट पार्टीज। तो जो हमने 6 पार्टीज पढ़ी, दे वर नेशनल पार्टीज एंड अदर देन देम मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड एज स्टेट पार्टीज। और हम ऑलरेडी क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं कि स्टेट और नेशनल पार्टीज के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। दीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज रीजनल पार्टीज. Yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. Parties like Samajwadi Party, Samata Party, Rashtriya Janata Dal have national level political organization with units in several states. Some of these parties like Biju Janata Dal or Sikkim Democratic Front and Mizo National Front are conscious about their state identity. Make sure you remember all the example with respect to what they are saying. जैसे ये तीन जो है they are conscious about state identity और तीन है जो they have national level political organization. Now, over the last 3 decades, the number and strength of these parties has expanded. This made the Parliament of India politically more and more diverse. No one national party is able to secure on its own majority in Lok Sabha, जिसके वजह से हमारे क्या होता है, coalition government बनती है, as I already explained. As a result, the national parties are compelled to form alliances with state parties. Since 1996, nearly one of the state parties had got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. ये बहुत ही simple था, it was not a complex. ये सारी चीज़ें हम already पढ़ चुके हैं previous topics में. अब हम जाएंगे next topic में, that is challenges. तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इससे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मेक श्योर यू पे अटेंशन टू इट. तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो फर्स्ट. सो वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसीज. सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर व्हाटएवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. ये हमने पढ़ा था कि ये डिसएडवांटेज भी है पॉलिटिकल पार्टीज की. All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. यही केस इंडिया में भी है. अब हम पढ़ेंगे जो challenges which are faced by our political parties. तो पहला challenge है lack of internal democracy. तो basically lack of internal democracy क्या कहता है? Almost all over the world, there is a tendency in political party towards the concentration of powers towards the like in one or few leaders at the top. जैसे कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में हमने जनरली देखा है वो गांधी फैमिली है, उन्हीं के हाथ में पावर है और कोई रिप्रेजेंटेटिव सामने नहीं आया है जनरली. एंड पार्टीज नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स होल्ड नहीं करते, इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते. एंड जो ऑर्डिनरी मेंबर्स है, जो नीचे वाले मेंबर्स है हायरार्की में, उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उनको सफिशिएंट चांस नहीं मिलता to represent them and to move to top positions. They do not have the means or the connections needed to influence the decisions. As a result, the leaders assume greater power to make decisions in the name of party. Since one or few leaders exercise paramount of power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. So basically ये बात कर रहा है, पहला पॉइंट का अगर समरी बोलूँ तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती. वो सब लोग जो है मेंबरशिप रजिस्टर नहीं मेंटेन करते, जो हायरार्की में नीचे लोग होते हैं उनको एडिक्वेट चांस नहीं मिलता, उनके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट प्रोसीड टू हायर लेवल्स. सो इट इज़ द मेन लाइक समरी ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से जो पावर है वो बस 1-2 हाथों में हो जाती है. एंड दीज लीडर्स मेक द डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, जस्ट इन द नेम ऑफ पार्टी. Second challenge. The second challenge of dynastic succession is related to the first one. तो second challenge है हमारा dynastic succession. तो basically, since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise up to the top in a party. तो उसके वजह से क्या होता है, जो leaders हैं, जैसे top leaders हैं, they are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. इसलिए in many parties the top positions are always controlled by the members of one family. इसका most prominent example इंडिया में है कांग्रेस, INC. This is unfair to other members of that party. This is also bad for democracy as
पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस या पॉपुलर सपोर्ट या फिर क्रिमिनल, ये सब भी इलेक्शन में स्टैंड हो सकते हैं. दे कैन बी द लीडर्स विच कैन एंड दे कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग, जो हमारी कंट्री को बहुत हार्म कर सकता है. अब हम मूव करेंगे थर्ड चैलेंज पे, विच इज द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर. ये स्पेशली प्रोमिनेंट होता है ड्यूरिंग इलेक्शंस. तो बेसिकली जो पार्टीज है उनका मेन एम क्या होता है, बस इलेक्शन जीते. तो समटाइम्स ना दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स एंड दे टेंड टू नॉमिनेट दोज candidates who have or can raise lots of money. Rich people and companies who give funds to the party tends to have influence on the policies and decisions of that party. तो basically let's say भाई एक rich organization ने एक पार्टी को जो है फंड किया, तो जो उस पार्टी की पॉलिसी होगी ऑफकोर्स कुछ नेगोशिएट किया होगा, कुछ एग्रीमेंट किया होगा कि अगर ये बन गई तो ये ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो. तो like there's a growing role of money and muscle power in parties, and in some cases parties support criminals who can win elections. Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic politics. ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है. अब हम बात करेंगे फोर्थ चैलेंज की. वो है कि जो पार्टीज है did not seem to offer a meaningful choice to the voters. तो बेसिकली देखो सारी पार्टीज ऑलमोस्ट आज है ना, जो उनके आइडियोलॉजी सेम है, उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस ही नहीं रहा है. उसमें जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो बहुत ही डिक्लाइन होता जा रहा है. जैसे द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल. दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एक्सपर्ट्स बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड. इन अ कंट्री टू द डिफरेंसेज अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड. Those who want really different policies have no option available to them. That is why we have a lack of meaningful choices. अब हम बात करेंगे last topic, which is how can parties be reformed. So basically it's deal with reforms. और ये भी बहुत ही important और direct question जो हमेशा आता है. Let's start with it. So in order to face these challenges, political parties need to be reformed. अब हम बात करेंगे 2-3 रिफॉर्म्स की. पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash rewards. इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने पास किया था एंटी डिफेक्शन लॉ, लाइक 53rd 52nd अमेंडमेंट के अराउंड था ये. तो बेसिकली ये जो है वो कोई भी मिनिस्टर को डिफेक्शन प्रैक्टिस करने से मना करता है. डिफेक्शन क्या होता है? बेसिकली चेंजिंग पार्टी फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी. ये मनी वगैरह के मैटर्स में भी हो सकता है. इट कैन बी ड्यू टू अदर रीजंस एज वेल. अब नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी MLA or any MP changes party, he or she will lose the seat in the legislature, and this has helped bring the defection down. That is बहुत कम लोग हैं जो parties change करते हैं. At the same time, this has made any dissent even more difficult. MLAs and MPs have to accept whatever the party leaders decide because they do not dissent. वो अपनी पार्टी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. क्यों? अगर वो करेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और वो अपनी सीट लूज करेंगे. इसलिए इसके भी बहुत एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है. Second, the Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. Now it is mandatory for every candidate who contests election to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. तो basically affidavit क्या होता है? ये एक document होती है जिसमें एक बंदा अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह देता है, वो सब और साइन करता है. And the new system has made a lot of information available to the public, but there is no system of check if the information given by the candidate is true or false. वो कुछ भी लिख देता है बट हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि we can verify that information. Hence ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो गया. Third, the Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. हमने पढ़ा था कि पहले ही चैलेंज में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, they do not conduct internal elections regularly. तो ये रिफॉर्म कहता है जो इलेक्शन कमीशन है उसने मैंडेटरी कर दिया है टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस एज वेल एज फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न्स. द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट सम टाइम इट इज मेयर फॉर्मेलिटी.
Sometimes it is more formality, and it is not clear if this step has led to greater internal democracy in political parties or not. ये तो हो गया हमारा ऑलरेडी जो रिफॉर्म्स हो चुके हैं, दे आर डन बाय इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम पढ़ेंगे क्या क्या पॉसिबल है. वो तो मेड था, अब हम क्या क्या पॉसिबल रिफॉर्म्स कर सकते हैं. फर्स्ट, a law should be made to regulate the internal affairs of political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its member, to follow its own constitution, to have an independent authority, to act as a judge in case of party disputes, or to hold open election to the highest post. मतलब ये जो हमारा चैलेंज था, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, उसको कर्ब करने के लिए ये रिफॉर्म हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सेकेंड, it should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3, to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in the decision-making bodies of the party. इससे क्या होगा, हमारी women empowerment होगी. Women empowerment, which is very much needed in India. Third point, there should be state funding of elections. The government should give parties money to support their election expenses. This support could be given in kind, petrol, paper, telephone, etc. Or it could be given in cash on the basis of the vote secured by the party in the last election. ये जो रिफॉर्म है हम इसको यूज करते हैं टू कर्ब द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर. देखो, पहली बात, अब ना इलेक्शन कमीशन ने एक लिमिट डाल दी है कि पार्टी इस अमाउंट से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती है इलेक्शन रैलीज पे. करेगी तो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो. क्यों? क्योंकि देखो, उसको मनी करने के लिए उसको रिच ऑर्गेनाइजेशन चाहिए फंड की, तो वो दोबारा एक चैलेंज में आ जाएगा. सेकेंडली, इसलिए वो क्रिमिनल्स और रिच पीपल को मतलब हायर करते हैं जिनको एडिक्वेट नॉलेज भी नहीं है अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स. इसलिए हम स्टेट फंडिंग इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि जो फंड है वो स्टेट प्रोवाइड करें, एंड दे डू नॉट हैव टू हायर क्रिमिनल्स या रिच ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कुड हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन आवर कंट्री. अब these suggestions have not yet been accepted by political parties. If and when these are accepted, these could lead to some improvement. But we must be very careful about the legal solutions to political problems. Over-regulation of political parties can be counterproductive. This would force all parties to find ways to cheat the law. Besides, political parties will not agree to pass a law that they do not like. मतलब उसकी unity strength हो जाएगी उनके within से. इसलिए there should not be over-regulation. But at the same time, उनको बिल्कुल ढीला भी नहीं छोड़ सकते. We need to introduce 2 to 3 reforms to maintain and to keep a check on them. There are 2 other ways in which political parties can be reformed. First, one, people can put pressure on political parties. This can be done through petitions, publicity and agitations, protests, वो सब. जैसे अभी farm protest हो रही है, farmers are like pressuring the government to take back the farm laws introduced by them. Second, ordinary citizens, pressure groups and movements and the media can play an important role in this. And if political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms. ये हो गया हमारा second point. ये दोनों बहुत ही important है. They are short and crisp points. अब 2 political parties can improve if those who want this joint Now, ordinary citizens, pressure groups and movements in media can play an important role in this. कैसे? जैसे हम protest, publicity, उन सब के लिए जो ये सब है, they can play an important role. If political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms. अब हम move करते हैं second point पे. Political parties can improve if those who want this join political parties, that is जिनको reforms चाहिए, अगर वो ही political party join कर ले, then we can have a positive impact. The quality of democracy depends on the degree of public participation. It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside. The problem of bad politics can be solved by more and better politics. इसलिए basically हम बोलते हैं जो democracy में vigilant citizens, they are very much necessary. क्यों? वो बहुत ही active होते हैं, they keep a check on everything. हम बस ऊपर से criticize नहीं करना चाहिए. We should be a part of system and then we should make some changes instead of just criticizing it from the outside. तो basically अब हम करते हैं अपना chapter complete. And I will upload notes in the description
section, so make sure you go through them once. They will help you to formulate your answers. Thank you for watching the video, and if you like the video, please share, subscribe and comment on the channel. Thank you so much.